Good morning, everyone. Your favorite sir, Karthik sir, is back again to teach you a new chapter today, and it's to truly understand a rainbow by Kathleen Krull. So, in this lesson, we have mostly highlighted about Isaac Newton, that how he discovered that light contains seven color. So, let's start from the beginning. So, this all started in the year during the year of 1666. So back then, Isaac Newton, he wasn't a great scientist. He was just an unfamous, brilliant college student who mostly spent his entire time studying new topic, questioning his teachers, and contradicting their points. Besides that, he never had much friends. Neither he spent out a lot of time like we do most of the time. So, in the college days, he spent most of his time just studying rather than hanging out with his friends or clubbing or going out somewhere to live a stress free life like we do 99% of the time in the college. हमारे लिए कॉलेज पढ़ाई लिखाई सेकेंडरी है, पहला है मज़े. लेकिन आइजैक न्यूटन के लिए पढ़ाई पहली प्रायोरिटी थी, घूमना फिरना सेकंड. So one day he visited annual market in the sense like mela, which happens once in a year. So visit the annual market. Over there he has seen many people, many stalls, many food items, many rides and so on. वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें देखी, लेकिन फिर भी आइजैक न्यूटन को वहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया. He liked only one thing, and it was a toy called a prism. Prism is nothing but a 3D triangle, or you can call this triangular. I don't know what do we call it as. Huh. So it's like a 3D triangle, a prism made of glass. So he purchased that toy, though he had very little money. He purchased that prism, and he really liked it so much that he purchased another prism from the annual market, and he kept it on his study table. Whenever he studied, he liked the way the light came out of prism, and displayed seven colors on the nearby wall. Soon in the year 1665, there's a great plague of 1665 in London. Just like COVID 19 we had in the year 2020, in the same way, sorry, my bad, COVID 19 in the year 2019, in the same way, there was a great plague in the year 1665 in London, which killed approximately 1 lakh population of London, which is almost one third population of a country in 18 months. So, because of such violent or such rapid deaths, rapid spread of virus, people started leaving London. Even Isaac Newton was forced to leave London and move to countryside. In countryside, he has his own house named as Woolsthorpe Manor, and that house was completely stone house. Stone house means currently we use bricks and cement, whereas back then they used heavy rocks or huge stones to crave a house or to make a house. That house was surrounded by apple orchards. So as we know, lockdown, हॉलीडेज हो या लॉकडाउन लग जाए, ऐसे टाइम पे एक स्टूडेंट क्या ही करता है ज़्यादा से ज़्यादा? पढ़ाई छोड़ता है, खेल कूद करता है, मस्ती करता है. भाई उस समय तुम भाई हम लोगों से मजदूरी करा लो, हम लोग मजदूरी कर लेंगे, लेकिन पढ़ाई का नाम बिल्कुल मत लेना. लड़ाई हो जाएंगी, घर बिक जाएंगे, दरार आ जाएगी फैमिली में, लेकिन हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे. लेकिन यहाँ पे आइजैक न्यूटन पूरे अलग थे. जहाँ हर कोई टाइम पास करता है ऐसे मून पे, आइजैक न्यूटन वहाँ पे भी लॉकडाउन में अपने घर में एक कमरे में खुद को आइसोलेट करके सिर्फ पढ़ाई करते थे. और उनके घर के पास उस कमरे में एक थी विंडो, जिस कमरे से उनका बाहर ओपन यार्ड दिखाई देता था, और उस यार्ड में और कोई नहीं होता, सिर्फ एक शीप, फ्लफी शीप वहाँ पे घूमती रहती थी और घास चरती रहती थी. तो उन्होंने भी सेम किया था, अपने स्टडी टेबल पे अपने प्रिज्म्स को रख दिया वहाँ पे, और वो जब पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने देखा वापस सेवन कलर लाइट उसके ऊपर गिर रही थी और सेवन कलर्स विजिबल हो रहे थे नियर बाय वॉल के ऊपर. सेवन कलर्स विजिबल हो रहे थे नियर बाय वॉल के ऊपर. अब ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो बस अरे वहाँ रेनबो दिख रहा है, रेनबो. लेकिन नहीं, यहाँ पे आइजैक न्यूटन का दिमाग चला और उन्होंने खुद को क्वेश्चन.
तो उन्होंने सोचा कि ये क्यों लाइट आ रही है वहाँ से. He got suddenly a question stuck in his mind, and that was, why did there was a, I mean, why the rainbow is, why the 7 colors coming out of this prism. उन्होंने ये क्वेश्चन किया. अब हम लोग क्या सोचते हैं, भाई रेनबो दिख रहा है, वाह जादू जादू जादू, लेकिन नहीं, इन्होंने अपनी थिंकिंग को अलग रखा. ही थॉट आउट ऑफ द बॉक्स. So, but before I mean, even before he proved a theory, there was a Greek philosopher named as Aristotle. Aristotle also have given a theory about these 7 colors. He said, Aristotle proved that light does not contain any colors in it. 7 colors are visible to us only when light and darkness combine together. Only then these 7 colors are visible. A few years later, or you can call it as a century or two later, another scientist named Robert Hooke. He supported theory of Aristotle. He said that yes, when light and dark, when they mix together, only then 7 colors are visible. अब उन्होंने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि जब हम लोग अंधेरे कमरे में रहते हैं और जब लाइट ऑन करते हैं और तभी सब चीज़ों के कलर हमको विजिबल होते हैं. तो उन्होंने ये देखा कि हाँ, जब लाइट और अंधेरा मिलते हैं तभी हमें 7 colors विजिबल होते हैं, वरना वो 7 colors विजिबल नहीं होंगे. ये चीज़ बताई थी ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने, और उसको सपोर्ट किया था रॉबर्ट हुक ने. और रॉबर्ट हुक ने इस प्रिज्म की थ्योरी को भी एक्सप्लेन किया था, और वो ये कहा था कि लाइट में कोई कलर नहीं होते हैं, जो भी 7 colors आते हैं वो आ रहे हैं प्रिज्म की वजह से ही. क्योंकि उन्होंने ये देखा था प्रिज्म भी बना है ग्लास का, जो कांच के ऊपर विंडोज़ भी लगी होती हैं वो भी होती हैं ग्लास की, और जब उसमें से लाइट बाहर आ रही है तो वो वाइट ही रह रही है. लेकिन जब लाइट प्रिज्म को लग रही है तो वो 7 colors में स्प्लिट हो रही है. इसका मतलब कलर लाइट में नहीं है, प्रिज्म लाइट को कलर कर रहा है. ये एक्सप्लेन किया था रॉबर्ट हुक ने. बट Newton did not agree on this theory. He thought it's wrong. There is something else. So first he proved Aristotle theory wrong. He took white color as well as completely black color, and then he mixed both of them. When he mixed both the colors, it turned out to be gray instead of 7 colors. He thought that if light and dark color, they are supposed to mix and produce 7 colors, then why are they producing only gray color? This proved Aristotle's theory wrong. And when it comes to Robert Hooke's theory, it was slightly difficult to prove wrong, because he has seen that only prism is changing the color of light into 7 different colors. Sorry, prism is the only one which is splitting the white light into 7 different colors. Now it was really hard for Isaac Newton to prove Robert Hooke's theory wrong. So he came out with an idea. He put the prism on his study table and covered the window with a completely sheet or slit, you can call it as, like a wooden pad, and made a small hole in that. As the light passed through the slit, it hit the prism, and then 7 colors appeared on the wall as usual. Then he thought of something else. He put a green color or green cover on the slit. Now the white light is coming out in green color. The green color hit the prism. Green color hit the prism. The green color hit the prism, and the same color came out of the prism. Now he changed the color to red. Again, the same line, same color came out of the prism. Then he changed the color to yellow, and again same yellow light struck the wall. Then to blue, yellow, and many other colors, but all the time same color appeared on the wall. But when he chose the white light, 7 colors appeared on the wall. This proved that prism is not changing the color of light, because if it was changing the color of light, then even the green color must come out in some different color, but it came in green. Same with red, yellow, blue, and many other colors. If prism was coloring the light, then all the different color light must come out in a
different color instead of the same color, but it only worked on white light. This proved that prism did not color the light. Light contains all the seven colors. Then he studied thoroughly and understood prism, why splitting the colors, how many colors are visible, and what's their wavelength. Isaac Newton he proved that Isaac Newton proved that light contains seven colors, and those seven colors are violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. And their wavelengths. When it comes to wavelength, when the wavelength is too small, then it will appear very less, whereas when the wavelength is really big, the spectrum is big, then it appears to be red. जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका कलर कम विजिबल होगा, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका कलर ज़्यादा अपीयर होगा। और हम लोग रेनबो में देख सकते हैं कि सबसे टॉप पे रहता है रेड कलर, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, और फिर लास्ट में रहता है वॉयलेट। क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा छोटी है। लेकिन जब बात आती है रेड की, इसकी वेवलेंथ कुछ ज़्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से इसकी पावर हो जाती है कम, विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। और जब बात आती है वॉयलेट की, इसकी वेवलेंथ कम होने की वजह से इसकी पावर हो जाती है हाई, लेकिन इसकी विजिबिलिटी हो जाती है कम। इसलिए रेनबो में सबसे टॉप पे रहता है रेड कलर और सबसे बॉटम पे रहता है वॉयलेट कलर, बेस्ड अपॉन देयर wavelength. After proving his theory wrong, he proved their theory wrong in his college with the help of experimentum crucis. एक्सपेरिमेंटम क्रूसेस की मदद से उन्होंने अपने कॉलेज में ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल और रॉबर्ट हुक की थ्योरी को रॉन्ग प्रूव कर दिया था, और इस थ्योरी को कॉलेज ने एक्सेप्ट कर लिया था, और उस थ्योरी को हम लोग अभी भी यूज़ करते आ रहे हैं। इसके बाद ये थ्योरी प्रूव करने के बाद आइजैक न्यूटन गए अपने घर वापस वुड्सथॉर्प मैनर, और जाके बैठ गए अपने एप्पल ट्री के नीचे। और हम लोगों को पता ही है इसके बाद कौन सी एक न्यू स्टोरी स्टार्ट होने वाली है एप्पल ट्री के नीचे से, और वो तुम लोगों को तुम्हारे हायर ग्रेड में आएगी फिजिक्स में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर कुछ डाउट्स आए हैं, कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ DM मी ऑन माई Instagram. I can clarify all your doubts over there. Or if you want me to explain any particular chapter of English of your subject, I mean of your grade, of your publication, then I am ready to explain it. Just ping me on my Instagram. Thank you. See you in the next class.